Okay, student, let's see. So at the 7th number in our revision part, we have this fair remuneration of employees. आपकी book में वो नाम लिखता है remuneration of employees. I always tell you that the word should be fair remuneration. To the employees भी लिख सकते हैं, of the employees भी लिख सकते हैं. So let me rectify. It should be to now. Fair remuneration to employees. Right. So what it means? What the employees actually deserve, that much amount actually we are supposed to pay to our workers, so that they should never feel harassed, they should never feel exploited in the hands of employer. All was of the opinion the remuneration should be fair. What is the meaning of fair? From the employee's point of view, with that much remuneration, they should be able to maintain their standard of living. Right? And what is the meaning of fair from employer's point of view? It depends upon his paying capacity. Okay, paying capacity. For example, he is running a sole proprietorship firm. So can he afford to pay 1 lakh rupee to his attendant? Not at all. But when we talk about the Tata Birla, they may pay 2 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 5 lakh per month to their employees, because that depends upon their paying capacity and the work they take from their employees. Right? So by defining this principle, you have to give the reference of fair. Fair from the viewpoint of employees, fair from the viewpoint of your employers. So बड़ी अच्छी line उसने लिखी है. At the same time, it should be within the paying capacity of the companies. In other words, remuneration should be just and equitable. So let me write it here, just and equitable. What is the meaning of just and equitable? Once he put a question and he put the case study of 2 employees, one is male member and another is female member. So the employer considered that female is weak strength-wise. So he was declaring less salary to the female employee, though both male and female, they were working at the same level. So it should be equitable, right? If both are the managers, they deserve to be paid equally. And don't favor फेमिनिज्म को डिक्लाइन नहीं करिए, उसे डिस्कार्ड मत करिए. अगर फीमेल कैटेगरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है और बिल्कुल मेल के इक्वल काम कर रही है, so don't mark any type of distinction between them. So this was the opinion of Fuel. This will ensure जब आप ऐसा करोगे और equal salaries पे करोगे, so this will create a congenial environment in our organization. लड़ाई झगड़े, conflicts, this is clashes will never arise. And you will be able to maintain very good relationship between you and with your workers. Consequently, the working of the company would be smooth. कोई strike नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कोई protest नहीं करेगा. So fair remuneration should be your policy, right? Then we have centralization and decentralization. This also I told you with the help of an example, like what is the meaning of centralization? Concentration of decision making power in few hands or in one hand. That is what we call centralization. Centralize होगी ना मेरी मुट्ठी, जब मैं इसे खोल दूंगी and I will be distributing the power or authority to my lower level. That is what we call decentralization. Means distribution of power throughout the organization is decentralization. तो Fuel is of the opinion आप दोनों में से कोई एक extreme नहीं choose कर सकते. You should always have a blend of it, a proper blend of it. Means जो important बातें हैं, blend means mixture. You will always be going with a mixture of centralization and decentralization, which is very, very important, which is, you can say, of foremost priority, which is related with research and development, which is related with expansion program, growth programs of our organization, that is to be kept with my top level management, and as all things are to be divided between the lower levels. About that, they can take the decision. And surprisingly, they may check what is going to happen in our organization. वो top level के पास हमेशा authority रहेगी, वो कभी भी sitting कर सकते हैं, लेकिन routine के matters अपने subordinates को करने को दे दो. This is what we call decentralization. So how he is defining in your book? Let me read few lines. The concentration of decision making authority is called centralization, whereas dispersal among more than one person is decentralization. जब आप उस authority को बांट देते हो आगे बहुत सारे लोगों में, तो वो क्या बन जाती है? डिसेंट्रलाइजेशन बन जाती है. फ्यूल कहता है देयर इज अ नीड टू बैलेंस. आई कॉल इट ब्लेंड. दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ना ही जरूरत से ज्यादा सेंट्रलाइजेशन अच्छी है. अगर सारी छोटे छोटे काम भी हमारा एम्प्लॉयर और ओनर और मैनेजर खुद करता है, मींस टॉप लेवल मैनेजमेंट खुद करती है, उसका मतलब है सबऑर्डिनेट्स पे उनका विश्वास नहीं. इट मींस कि ऐसे हालातों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट which should always be avoided, and nobody wants to work in this autocratic management. Autocracy means bureaucracy है, like Hitler.
You are treating your employees like machines. आप उन्हें मशीन की तरह ऑर्डर कर रहे हैं, which should not be there. You should give them certain autonomy. So that's why fuel always says there should be a balance of what? Centralization and decentralization. The degree of centralization depends upon the circumstances. उसने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हमें नहीं बताया कि कितनी सेंट्रलाइजेशन, कितने परसेंट सेंट्रलाइजेशन है और कितने परसेंट डिसेंट्रलाइजेशन. ठीक है, it depends upon the circumstances. If for example, I'm quoting one example. For example, you are running a sole proprietorship, then 100% concentration in the hand of one person, because he is the manager, he is the owner, he is the employer, he is the employee. अकेला बंदा ही तो है, वन मैन शो है, तब सारी की सारी पार उसके अपने हाथों में होगी. But had it been a partnership firm, तो हम थोड़ा सा dilute करेंगे. But had it been a public limited company, हम सिर्फ important बातें अपने पास रखेंगे, बाकी सब कुछ disperse कर देंगे. So this is what we call, it depends upon the type of organization you are running. Like in my country, if I take the example of our own country, which is undoubtedly is a democratic nation, and hereby centralization and decentralization is there. Our central government has taken only 3 departments in its control. One is railway, other is arms, ammunition, and defense. Nuclear part testing. सिर्फ ये 3 डिपार्टमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं. बाकी सारा कुछ यहाँ तो प्राइवेटाइज कर दिया या स्टेट गवर्नमेंट को दे. So हमारे अपनी कंट्री में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है. At the time of explaining this concept in your paper, you will never be giving the example of your nation. You will be quoting the example from your business field, right? The way I told you, it depends upon the circumstances. Like if it is a sole proprietorship firm, then 100% centralization होगी. लेकिन अगर public limited company है और business का size बढ़ जाता है, उन हालातों में आप सारा कंट्रोल अपने सर पे लेके काम नहीं चला पाओगे. आपको कुछ ना कुछ अपने लोअर लेवल को डिवाइड करना ही पड़ेगा. So this is what we call proper balance, a proper mixture, a balanced blend of centralization and decentralization is required. उसने पंचायती राज के बारे में बोला है. लाइक पंचायत को विलेजेस में फुल फ्रीडम दे दी गई है. वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते, उनको फुल ऑटोनॉमी है. दिस इज व्हाट वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ लेट मी कम टू द स्केलर चेन. पहले तो आपको स्केलर चेन का मीनिंग पता होना चाहिए. इट इज अ चेन व्हिच रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और दिस इज अ चेन ऑफ कम्युनिकेशन, और इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन व्हिच कम्स फ्रॉम योर बॉस टू योर सबऑर्डिनेट. आपके बॉस से शुरू होता है और सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचता है. ठीक है. सो स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी व्हिच रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम. आप उस चेन को बीच में से ब्रेक नहीं कर सकते हो. बट when I frame this diagram of scalar chain, I always call it inverted V. आपने V को उल्टा कर दिया इंग्लिश के अल्फाबेट को. So here is A B को मैसेज देगा, B आगे C को बोलेगा, A सीधा C को नहीं बोलेगा. A इमीडिएटली अपने सबऑर्डिनेट को बोलेगा और B इमीडिएटली अपने सबऑर्डिनेट को. अब C का सबऑर्डिनेट D है तो वो G को बोलेगा, D का सबऑर्डिनेट E है तो वो E को बोलेगा. इधर P है, A P को बताएगा, A सबका बॉस है भाई, P आगे Q को बताएगा, Q आगे R को बताएगा और R आगे S को बताएगा. But in case of emergency, D को R से बात करने की परमिशन है. Similarly, C को Q से बात करने की परमिशन है. तो यहाँ पे ऐसे फंडा नहीं चलेगा कि D पहले E को बताए, E फिर P को बताए और फिर Q से R तक बात पहुंचे. नहीं, आप अपने पैरेलल पर्सन्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. But in case of emergency, you are supposed to follow this shortcut way of communication, which we call Gangplank. Otherwise, you are supposed to follow your superior subordinate relationship. Every time the subordinate gets the message, will get the communication from his or her superior. हर बार हमारा subordinate अपने superior से ही message receive करेगा और वो आगे in turn अपने subordinate को वो बात बताएगा. So I am quoting the line which he is defining in your book. The formal lines of authority from highest to lowest. मैं बोलती हूँ from top to bottom. ठीक है, तो कोई भी वर्डिंग आप लिख सकते हो. Lowest ranks are known as scalar chain. Organization should have a chain of authority and communication that runs from top to bottom and should be followed by managers and the subordinates. Subordinate और managers को वैसे तो यही chain follow करनी है, लेकिन emergency में कोई रातों रात मैसेज डिलीवर करना है. ठीक है, C ने B को बोला कि तेरे को R जानता है ना, तो उसको भी मैसेज दे दे. तो वहां पे हम लोगों ने चेन को ब्रेक कर दिया और इमीडिएटली R तक वो मैसेज क्या हो गया, कन्वे हो गया. So this is to be done and to be created only in case of emergency, when we want to communicate very quickly. ऐसे मैसेजेस को कम्युनिकेट करने में देरी और डिले की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप बहुत जल्दी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, emergency situation है, then you can adopt the shortest possible way which we call Gangplank, right?
So next I have arrived at which we call principle of order. A place for everything and everything at its place. That is the tagline for my principle of order. ठीक, जैसे मैंने रिवीजन टेस्ट में भी डाला था that a person or a worker wastes his time in the search of the toolbox. Toolbox उसको उसकी जगह पे ही नहीं मिला, वो उसे ढूंढता ही रह गया. So in that case, the principle of order was being violated. A place for everything and everything at its place. A place for everything and everything at its place is called order, principle of order. ठीक है, पहले तो हम लोगों ने हर चीज को रखने की जगह फिक्स करी है और जब कभी भी हम वहां से वो चीज उठाते हैं हम दोबारा उसको वहीं पे रखते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल a place for everything and everything at its place. This is what we call principal order या order, principle of order. ठीक है, तो अगर हम ऐसा फॉलो करेंगे ना हमारे एम्प्लॉइज का टाइम वेस्ट होगा, ना हमारा टाइम वेस्ट होगा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ेगी. ये गोडाउन में गई है, आपको सामने ही सामान पड़ा दिख गया, यू पिक द मटेरियल, straight away you come to your production center, so very less time you have taken to take the material from storehouse to your production center. Similarly, your customer is waiting at the shop and you ask your attendant to bring the material from the godown. He takes only 2 minutes to bring the material because godown is totally managed. The godown was total in order. ठीक है, गोडाउन में कोई भी सामान बिखरा नहीं पड़ा था और हमारे अटेंडेंट को पता है कौन सा सामान कहाँ पे पड़ा है. So for that I always quote one more line that square bottles are to be fixed in the square modules and round bottles are to be fixed in the round modules. मतलब जो चीज जिसमें फिट आती है आपने उसको वहीं पे रखना है, इधर उधर सामान को बिखेर के नहीं रखना. So this order principle is being applicable to the man as well as to the material. सामान को तो उसकी फिक्स जगह पे रख दिया और हमारे स्टोर रूम को मैनेज करने का एक प्रिंसिपल होता है हमेशा हैवी मटेरियल नीचे रखना और लाइट वेट ऊपर रखना. अगर लाइट वेट कहीं गिर भी जाता है तो टूटने की पॉसिबिलिटी कम होगी, किसी के ऊपर गिरेगा भी तो ज्यादा चोट नहीं लगेगी. हैवी मटेरियल एक तो ऊपर से उठाना इज अ कम्बसम जॉब, अगर गिर गया तो नीचे पड़े सामान को भी अपने तले दबा देगा और बाकी लाइट वेट मटेरियल भी खराब हो जाएगा उसके कारण. सो ऑलवेज कीप द heavy material in the lower shelves and the light material in the upper shelf. This is the rule to place the things in our godown. Then he says this principle of order is not only being applicable to the material, rather it is also to be applicable to the men. So whatever they deserve, for whatever they suits best, आप उनको वही जॉब करने को दो. ये नहीं है उनका क्वालिफिकेशन +2 पास है और आप उन्हें मैनेजर की पोस्ट दे रहे हो, रॉन्ग. They will not be able to justify. और दूसरी तरफ आपके पास MBA पास बंदा है, आप उसे क्लर्क बना रहे हो. It should not be the policy of our organization. Whatever they deserve, whatever they are suited for, that job is to be given to them. This is what we call principle of order being applicable to the man as well as to the material. Then I have equity. My next principle is equity. Equity means equitable behavior on the part of management with each and every employee of the organization. आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एम्प्लॉय के साथ इक्विटेबल बिहेवियर रखते हैं. ये नहीं है कि कोई आपके रिलेशन का है बंदा, आप मुस्लिम हैं तो आपके एम्प्लॉय जो मुस्लिम हैं आप उन्हें रोजा अपने छुट्टियां भी अलाउ कर देते हैं बिना उनकी सैलरी काटे. ठीक है, अगर हिंदू है तो नवरात्रों में आप उन्हें हाफ डे दे देते हैं बिना सैलरी काटे. इस तरह का favoritism is not to be followed in the organization. If this will happen, then other employees may crib, they will be going on protest, they will be going on strike, etc. In order to avoid such type of clashes, always follow the equitable behavior with each and every employee. Okay, don't discriminate them on the basis of gender, on the basis of religion, on the basis of caste, etc. Just be equitable with everyone. Just be justified with everyone. ठीक है, your biasness you have to keep aside. Rather you have to set an example in front of your workers. कि आपके workers जब आपस में बैठे फ्री में तो ये बात करें हमारा मैनेजर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता. Whosoever is a deserving candidate वो उसे ही प्रमोशन देता है, उसी के मार्क्स लगाता है, उसी की आगे रिकमेंडेशन करता है. So our boss is not following any prejudices or any bias in regard to any religion, in regard to any caste, etc. So this should be the policy of you as a manager.
So whatever lines he is writing, that are certain typical lines I am reading. Good sense and experience are needed to ensure fairness to all employees. सबके साथ आपने fair behavior रखना है. उसके लिए आपके पास सोचने की अच्छी शक्ति हो, आपकी सोचने की अच्छी शक्ति, मीन सोचने की शक्ति और good sense जिसे वो कह रहा है, and your experience. If you are a fresher, like अभी आप MBA पास करके आए और पहला साल ही आपका जॉब का है, तो हो सकता है आप कुछ क्या करो, फेवरेटिज्म करो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है. लेकिन you being a commerce student, now you are reading in your school level, or later on you will be reading these concepts in your degree class or post graduation classes, so definitely you are now familiar कि equitable behavior रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो हो सकता है कि आपका इतना एक्सपीरियंस ना हो, तो हो सकता है कि आपका equitable behavior ना हो, लेकिन धीरे धीरे with your experience you just learn to be fair with the employees who should be treated as fairly as possible according to Fuel. This principle emphasizes, yes, very good line, kindliness. This line he picks and he asks a question, kindliness and justice in the behavior. हमेशा खड़े नहीं रहो, हमेशा दूसरों को डांटते नहीं रहो, आपको काइंडलीनेस और जस्टिस का बिहेवियर अपने वर्कर्स के लिए फॉलो करना है. दिस विल एंश्योर देयर लॉयल्टी एंड डिवोशन. अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्कर्स आपके लिए लॉयल हों, आपके वर्कर्स आपके लिए डेडिकेटेड हों, आपके वर्कर्स अपना 100% दें, तो आप भी तो उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखो ना. हर टाइम उन्हें डांटते फटकारते नहीं रहो, हर टाइम उनमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं ढूंढते रहो. इफ somebody is doing something great, then give them compliment. You know, वर्कर्स को सिर्फ एक शाबाशी का वर्ड कह देना और ये कह देना गुड, कीप इट अप, आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट मैटर्स अ लॉट और दैट मीन्स अ लॉट टू देम. So you have to follow such type of justified behavior, such type of kindliness behavior with your workers. Fuel does not rule. Yes, कहता है यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल भी उनके साथ दयालु हो जाना, डांटना बिल्कुल नहीं. नो, जहां पे डांट फटकार की जरूरत है उन्हें डांटिए, जहां पे उन्हें फोर्स करने की जरूरत है उन्हें फोर्स करिए. और आपको लगता है कि दे आर सिटिंग आइडल थ्रू आउट द डे, ठीक है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर वर्किंग, सिटिंग इन अ ग्रुप एंड डूइंग द गॉसिपिंग, ग्रुप गॉसिपिंग चल रही है, देन यू हैव टू टेल देम, आपको उनको बोलना है यू आर नॉट हियर फॉर गॉसिपिंग, यू आर हियर टू वर्क. सो वहां पे आप अपने फोर्स का काम, अपनी डेसिग्नेशन से काम लेंगे, आप उन्हें ऑर्डर भी करेंगे, आप उन्हें डांटेंगे. Rather he says that lazy persona should be dealt with sternly. मतलब जो आलसी लोग हैं वो कहता है उनके साथ आपको डांट फटकार से ही काम लेना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तो नेचर होती है वो वेले बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं. लेकिन हमारे लिए ऐसा हमारे ह्यूमन रिसोर्स का लॉस हो जाएगा, इसलिए we have to be strict with them. We need not to be polite every time. We need to be strict when they are not working as per your expectation. So there should be no discrimination against anyone on account of gender, religion, language, caste, belief or nationality. You have to be equal with them. In practice, we can observe that nowadays in multinational companies, वो हर caste, हर region के बंदे को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं. Even different nations के बंदों को भी वो अपॉइंट करते हैं, different language बोलने वाले बंदों को अपॉइंट करते हैं MNCs में, right? So MNCs, they are following the equitable behavior, right? Then we have stability of personnel. Let me write it here. Stability of personnel. What it means? The workers you appointed once should not leave your organization very soon. जिन बंदों को आपने अपॉइंट किया है वो जल्दी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाएं. That is what you have to ensure the stability of personnel. What is the meaning of personnel here, students? That is group of persons. Group of persons को we call personnel. ठीक है, this is NY personnel. So frequency with which your organization's employee leave the organization, that we call labor turnover. You have to reduce the labor turnover. Frequency with which your old employees leave your organization, that is labor turnover. बहुत जल्दी जल्दी आपके पुराने एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं. हाँ, उनकी रिटायरमेंट हो, किसी का कोई फैमिली मेंबर कहीं पे शिफ्ट हो रहा है, उसको अपनी फैमिली के साथ वहीं पे जाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. आमतौर पे इट हैपेंस विद द लेडीज और फीमेल्स, लाइक हस्बैंड की कहीं और जगह पे ट्रांसफर हो गई तो दे लीव योर ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे हैव टू गो और शी हैज टू गो विद हिज हस्बैंड, विद हर हस्बैंड टू दैट न्यू प्लेस, राइट. लेकिन इसके अलावा अगर बहुत जल्दी जल्दी आपके पुराने एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं, इट मींस कि देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स, देयर आर सर्टेन लूपहोल्स इन योर वर्क कल्चर. In that case, you need to improve the work culture. You need to stabilize your employees.
हो सकता है कि वो आपकी वर्किंग पॉलिसी से खुश नहीं है, हो सकता है कि जितना वो डिजर्व करते हैं आप उन्हें उतनी सैलरी नहीं दे रहे, मॉनेटरी बेनिफिट से सेटिस्फाइड नहीं है, सो इन दैट केस यू नीड टू स्टेबलाइज देम। एडहॉकिज्म, टेम्परेरी बेसिस पे अपने एम्प्लॉइज को नहीं अपॉइंट करिए, जब भी उन्हें अपॉइंट करिए उन्हें बोलिए कि यू आर हियर ऑन परमानेंट बेसिस, ठीक है। तो आपका हम ट्रायल 1 या 2 साल का रखेंगे, if we feel satisfied with your work we will be making you permanent. So such type of job security should always prevail in the organization, then only you can ensure their stability in your organization. We have arrived at 13th number, students, that is what we call initiative. Initiative, जिसे हिंदी में बोलते हैं पहल कदमी. Don't snub your employees, just ask them to come forward and give the suggestions for the improvement in the organization's working. Right? अगर आपको लगता है कि हमारी organization में कोई कमी है तो you can just advise us. You can make or install a suggestion box in your organization whereby they can put the suggestions for the improvement or upliftment of the organization. By doing so, the employees will consider themselves as the important part and parcel of the organization, and you should make them feel like that. जरूरी नहीं है कि आप उनकी बात मानोगे, लेकिन if it is feasible, you can just apply their suggestion. और suggestion के लिए आप अवार्ड भी रख सकते हैं कि किसी की suggestion हमें अच्छी लगेगी तो definitely we are going to implement it and we are going to honor that person. This is what we call initiative. ठीक है, इससे again you will be getting their loyalty and dedication for the employee. A good line लिखी है जो मैंने बोली, a good company should have an employee suggestion system whereby the initiative or suggestion which result in, किस चीज की suggestion दो कि अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे हमारी लेबर कॉस्ट कम हो सकती है या प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है, तो यू टेल टाइम रिडक्शन, टाइम कम लग सकता है सामान को बनाने में, मतलब सेविंग ऑफ टाइम एंड सेविंग ऑफ कॉस्ट. इफ यू हैव एनी सजेशन यू कैन टेल अस, ठीक है. If it will be feasible, we will just be implemented. Last but not the least is again very very important, which we call I should be replaced with we. I should be replaced. मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं को मेरे हम में बदलना है. I is to be replaced with we. So I should write with Hindi. मैं को हम में बदलना है. हम मिलके काम करेंगे तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं. So this principle tells you the importance of team spirit. मिलजुल के काम करेंगे. Unity in strength. एकता में बल है. Unity in strength. हम सब मिलके काम करेंगे, सबकी contribution होगी, तो we can do wonders. This is what we call aspirate decox. A Latin language, not an English word. Aspirate decox. लेकिन इसका हिंदी में मीनिंग यही है, एकता में बल. Team spirit. That is aspirate decox. Unity in strength. टीम स्पिरिट को इंपॉर्टेंस देता है हमारा ये प्रिंसिपल, ठीक है. आई शुड बी रिप्लेस्ड विद बी. मैं को हम में बदलना है. अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद बी इन ऑल हिज कन्वर्सेशन. वी विल बी डूइंग दिस. वी कलेक्टिवली विल डू दिस. वी ऑल टुगेदर विल डू दिस. मींस जब कभी भी कोई सर्कुलर निकाले तो वहां पे ये ना लिखे आई, वी से हर उसकी वर्डिंग स्टार्ट हो, ताकि हमारे वर्कर्स को भी लगे कि यस हमें भी इंपॉर्टेंस मिल रही है. This will give a rise to a spirit of mutual trust and belongingness among the team members. It will also minimize the need for using penalties. जब सब मिलके काम करेंगे और सबको बोल दिया है कि you are the important part of your team. जैसे मैं देखती हूँ जब कभी भी एक ओवर खत्म होता है तो जो टीम का कैप्टन होता है वो सारे मेंबर्स के साथ ग्रुप बना के उन्हें गाइड करता है कि अगले ओवर में हम कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे. How the bowler will be bowling and how the wicket keeper will stand, उसकी क्या पोजीशन होगी, बाकी सारे फील्डर्स पूरे ग्राउंड में कैसे सेपरेट होंगे, he used to tell. तो वहां पे भी टीम स्पिरिट के कारण ही तो टीम जीत पाती है. तो यहाँ पे कंपनी की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? Upon the belongingness and trustworthiness of all of my employees. And this is to be made sure by our manager. और मैनेजर को अपनी सारी कन्वर्सेशन में आई को बी के साथ क्या करना है? रिप्लेस करना है. उसको बोलना है आपके बिना मैं कुछ नहीं, ठीक है. So he should understand the importance of his team members. This is what we call I should be replaced with we. Any doubt to anyone in today's lecture and today's revision, you may ask.